All right. Very good afternoon to all. Peace and blessings be upon you. Uh, Ashhar this side from Skillshark. Today's topic and our discussion will be about how to make a career in EV industry. So myself, Ashhar Ahmed, basically I'm an EV enthusiast working in this domain on multiple propositions, starting from retrofitting to new product development, skill-based education and all. So basically, I started my mobility journey by building electric vehicle projects. So when I was in college time, we used to build different electric vehicle projects like electric car, a solar car, electric two-wheeler and all, and we used to participate in international events like World Solar Challenge and many other international events. So that's how I got my inclination towards electric vehicle, EV industry, and EV ecosystem. So after that, after completing my bachelor's in mechatronics engineering, we got into a venture of retrofitting, converting existing petrol diesel vehicles into electric. And we used to do that, and understanding the challenges and pain points of the retrofitting ecosystem or retrofitting approach, we ventured into new electric vehicles and as well as upskilling. So presently we are doing upskilling skill development for the EV industry and EV ecosystem. So let's start our discussion about how to make a career in EV industry. So when we are talking about EV industry, so EV or automobiles, electric vehicles, all these things are part of our mobility or transportation system. Transportation is need of all the people connected to the system, starting from engineers, doctors, all the people, those who are traveling or those who are in system in our society, they need transportation. They want to travel from one place to another place. मुझे कहीं जाना है तो I need vehicle, I need automobile, I need something to move from one point to another point, right? So automotive industry is the fourth largest in the world. Now we are talking about automotive industry in India. So automotive industry in India is the fourth largest in the world, having annual turnover of around $100 billion. You can understand $100 billion, right? So like the automotive industry is having a huge turnover, and it is employing around 32 million people, right? So 32 million people is a big number, mashallah, right? So you can see that automotive industry is having a lot of potential, and it is emerging. Amid this pandemic also, there were few positive signs with regards to e-mobility, electric vehicles, right? So future is going to be electric. Why future is going to be electric? There are so many challenges that we are facing with regards to present automotive system, right? There are so many challenges that we are facing, starting from global warming to pollution and greenhouse gases. Then the cost of petrol and diesel is increasing. So there are a lot of challenges. Then energy security. Likewise, there are so many challenges that we have to overcome, right? And these challenges can be overcome, right, through e-mobility. It is the proposed solution. It is the proposed solution that all these challenges can be overcome through e-mobility or electric vehicle, right? So unless and until we are implementing electric vehicles for next 5-10 years, we will not be able to assess the real impact of electric vehicle or adoption of electric vehicle. So in coming days, starting from passenger vehicles to commercial vehicles and two wheelers, micro mobility, all these things are going to be electric. And you can see the recent trends and the data from different reports, right? So by 2030, many governments, including our Indian governments, they have a plan of having electric vehicles on road, like sales of only electric vehicles. So and hybrid electric vehicles and multiple other alternate fuel vehicles such as hydrogen fuel cell vehicle and all. So future is going to be with regards to e-mobility. When it comes to EV penetration in past few years, we can observe and we can actually explore the data of past few years. Like many automotive manufacturers, starting from the top automotive manufacturers, you can say Volkswagen, GM, Ford, BMW, many others have also joined, this league or this way of electrification of mobility, right? So they are coming up with their electric models of the existing products that they are having, right?
And these products, these things that are there, it might be like electric two-wheeler, electric three-wheeler, electric four-wheeler, LCVs, electric tractors, and many other things are coming in the portfolio of vehicles or automobiles, right? So all these things that we are able to see in past few years, right, gives us a clear indication that the manufacturer side as well as the government side, there is going to be a huge push for electric vehicle, specifically for the penetration of electric vehicle. You might be aware that the government of India, right, started National Electric Mobility Mission Plan 2020, right? I guess around year 2013, 14, something like that. This plan was initiated, National Electric Mobility Mission Plan. And in order to achieve this plan, the government of India actually rolled out FAME India scheme, right? Faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles, right? FAME India scheme. So in Indian EV market also, we can see that there is significant growth in adoption of electric vehicles, in sales of electric vehicles, in incentives by the government, as well as many other offers by the government, in terms of taxation, in terms of subsidies, in terms of charging infrastructure support, and multiple other things. So the electric vehicle, specifically in Indian market, is going to be a huge potential market, right? Now, let's have an understanding about what are the players in present EV ecosystem, right? What are the products they are bringing into market on roads, right? And then analyzing all this information that we have seen, we will see how you can contribute or how you can make your career in EV industry. So when someone wants to make a career in EV industry, there will be two areas, right? One can be employment, another can be entrepreneurship, right? मैं ईवी इंडस्ट्री को ज्वाइन दो तरीके से कर सकता हूँ. एक एंटरप्रेन्योरशिप, अनदर विल बी एम्प्लॉयमेंट, राइट? आई कैन गेट अ गुड जॉब with my skills in EV industry. That is one way. Another way will be I can I can start my own venture. I can start my own startup or a company, right? Into different potential areas that are there in EV industry or EV ecosystem. So these are two ways how I can kickstart my career into EV domain or EV segment, right? So here we are going to analyze these things. If I want to start my career in EV company as a employment, right? What are the skills I need? What are the things I must focus on, right? And on the other hand, if I want to become an entrepreneur, EVpreneur, or like entrepreneur in EV domain, what are the things I must explore? I must understand, and I must take forward. All these things we are going to discuss in coming slides. Before that, let's understand present players. All these information that we are discussing now will help us in understanding the potential that is there for youth to start your career, either in terms of employment or entrepreneurship, right? So you can see that Hero Electric, Okinawa, Ampere, Ather, Revolt, Bajaj, all these companies, they are making their product specifically in terms of two wheelers, right? And these products vary in terms of their dimension, in terms of their features, in terms of their pricing and all. But you can see that these products are acquiring the market share, as well as they are getting adopted by the masses or by people, right? And we are able to see these things on roads in metro cities. Specifically, you can see in Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Pune, Ahmedabad, like that. You can see these vehicles running on road, right? So in terms of two wheeler, we can see Hero Electric is there, Okinawa is there, Ampere, Ather, Revolt, TVS, etc. In terms of three wheeler, there are like players, Mahindra Electric is there, Lohia is there, Atul is there. So these three wheelers can be for passenger transport, or these can be for logistic or for freight transport as well, right? So these are different players, right? And then electric vehicles exist in the domain of agriculture category also, like Sonalika, Escort, Celestial Mobility. Celestial Mobility is a startup based out of Hyderabad that made very first one of the first electric tractor in India. Then in material handling also, electric vehicles are coming. In heavy commercial vehicles also, electric vehicles are coming. In electric boat also, in boat or in I can say water transport, waterways also electric vehicles are there, right?
uh, you might have heard about India's very first electric boat. Around, I guess, 2017, we had this India's very first solar electric boat. The name of the boat, any suggestion, any guess? So the name of the boat was Aditya. Aditya is India's very first solar electric boat, right? By a company called Navalt. It is there in Kerala. You can browse more about it, and you can definitely read and get more information. So yeah, so we have electric vehicles in agriculture, material handling, heavy commercial vehicles, boats, and then, as we have seen, three-wheeler, four-wheeler, and two-wheeler as well. So all these things are coming on road. All these things are getting developed, right? But what about ecosystem? If we have charging infrastructure, if we have vehicles, like, will we be able to run this transportation system based on EV? No, we need entire ecosystem, starting from I will say power generation to power management, grid management, charging infrastructure, home charging, commercial charging, battery production, then powertrain production, motor controller, manufacturing, troubleshooting, skilled workforce, recycling units, battery recycling. All these things together will form an entire ecosystem, and we need ecosystem approach to solve this present challenges in automotive industry and EV industry, right? So you can see there are so many opportunities. As you can see that presently our focus is either on electric vehicles or charging infrastructure. There are so many elements getting missed. So potential opportunities are there for both entrepreneurship as well as employment in these different sectors, right? So now let's understand how to make a career in EV industry, right? I'll not take much of your time. I'll try to convey my information in very crisp and uh, uh, in a focused format, right? So there are multiple opportunities, right? There are multiple opportunities for employment as well as entrepreneurship in EV industry, starting from research and development, design development, manufacturing, maintenance, infrastructure, recycling, and business development. So now, focusing on these topics, I will try to segregate both the types of opportunities: employment opportunities as well as entrepreneurship opportunities, so that you will be able to get the relevant information, as well as you'll be able to relate these things, right? So first, let's try to focus on EV research and development. Whenever a particular product comes into market, right, there will be lot of research and developments going behind that particular product. You take example of a mobile phone, you take example of laptop, you take example of water bottle also, right? So water bottle, I was able to see one of the posts on LinkedIn, right, regarding the design of water bottle. So there are so many design iterations, there are so many simulations and all those things that goes whenever a product is being made. So EV research and development is a kind of discipline, or is a kind of domain where all sorts of iteration, experimentation, and simulation, design development activities related to new product and related to new research. For example, presently we have batteries, right? How we can improvise the capacity of the battery, the energy density of the battery, the performance of the battery, how we can reduce the cost of the battery, right? Researching about new technologies, alternate ways, alternate fuels, multiple things. So all these things comes under research and development, right? So now one person can get into a research and development company in EV industry, or he can start his own venture into research and development. I'll give you both examples. For example, if I'm a student, Ashar is a student, I'm studying mechatronics engineering at SRM University. For example, I'm studying mechatronics engineering at SRM University. I want to get into EV research and development, right? What I have to do? So I want to do a job in EV research and development company, right? Let's take example. First example, I want to do a job in EV research and development company. The first thing that I should have is I should have knowledge about EV industry. There are so many things, right? Knowledge is one part, awareness is another part, a third part is skill, right? So I must have knowledge about industry, right? What is an electric vehicle? What are the parts of electric vehicle? How electric vehicle functions? What is the market scenario in India with regards to electric vehicle? What are the products? Who are the manufacturers? What challenges they are facing? What are the opportunities, and what are the pain points of the industry? What is the SWOT analysis of the industry, right? What are the different companies that are hiring, for what roles they are hiring,
what job description they are having presently for a particular profile and all, right? I have to step by step explore all these things, and I can use internet, I can use LinkedIn, I can use so many other apps, resources that are there on internet in order to understand, in order to explore these things, right? After getting these things, I should implement few of my ideas into research and development. For example, if I'm getting interested in battery, right, I can see how I can design my own battery pack, simulate my own battery pack, calculate my own battery pack, do an internship in a particular company, paid and paid internship, do some minor project into battery, right? Do my major project into battery, collaborate with my professor to write a research paper on my topic of interest, assist him in his PhD work, research work, whatever it is related to my area of interest of battery. Like, so likewise, I have to do all these activities through 4 years of my engineering, so that at the end of 4 year I will be having experience of what I want to become or what I want to do. So if I'm following all these activities during the 4 years of engineering along with my academic work, along with my academic studies, right, then I will be in a position to be appropriate for a particular profile of EV intern or EV GET in research and development profile or something, right? This is the thing that I must do if I want to get a job in EV research and development, right? Another case or another scenario will be where I want to become entrepreneur in this domain of research and development, right? So if I want to become entrepreneur, I want to start my own company, my own venture in R&D of an electric vehicle. Then what I must do, I must have, as I said, first I must have knowledge about EV, right? What is an electric vehicle, types of electric vehicle, components of electric vehicle, challenges, opportunities, right? These things I must have knowledge about, and then awareness. What is happening presently? What is the market scenario? What are the developments happening? What are the technological developments happening in India, in abroad, in other countries? What are the different case studies? How other countries are adopting the future mobility, right? Presently in India, we are focused on electric vehicle. Believe me, other countries they have started adopting case mobility. Case mobility is nothing but connected, autonomous, shared electric mobility. So it's going to be autonomous vehicle, it's going to be a connected vehicles and all. We are going to discuss those things in coming slides or in coming, few minutes. But yeah, so I must have awareness about what is happening in and around me, right? Then I have to figure out which discipline or which is the area as an opportunity for me. For example, in India, right, like lots of import is happening in terms of battery, motor, controllers, chargers, and all. Right. So I can design my own BMS, battery management system, right? And I can start selling my own BMS, right? That is one opportunity. Or else I can start, research or R&D in motors, BLDC motors. BLDC motor market is a huge opportunity, right? Why I can start designing and developing our own motor, BLDC motor that can go for micro mobility like cycles, scooters, something like that, right? Ranging from 250 watt to 1 kilowatt. I can set up a range and I can start designing and developing that motor, right? I can apply for IP. I can go for a patent or IP, right? Then set up a manufacturing unit based on investment VC and all those scenarios, right? So likewise, different domains that we are able to see on my screen: research and development, design and development, manufacturing, maintenance, infrastructure, recycling, business development. All these are the potential opportunities both for employment as well as entrepreneurship, right? In design and development, for example, I want to set up my career in EV industry, right? In design and development, and what I can do, I can start learning about design from my first semester itself, right? I can learn about CAD, I can learn about AutoCAD, different softwares that are there, right? Presently SolidWorks is there, ANSYS is there, CATIA is there, 3D experience is there, then what is that, Altair software. So many softwares are there that you can start learning. So in design and development, you see, you can be on the part of like mechanical design and development or electrical design and development. If you want to be in mechanical, right, you can learn about this ANSYS, CAD, SolidWorks and all.
right? If you want to be on the side of electrical, then MATLAB is there, LabVIEW is there, then Eagle is there. There are so many softwares related to PCB designing, related to electrical simulations, and all those things, right? And nowadays, integrated softwares are coming, multidisciplinary softwares are coming. In a single software, you can do the electrical simulation also, mechanical simulations also. Lot of things are coming. Cloud-based softwares are coming, right? You can explore more and more about that. You can, from first day itself, you can focus on your design skills, right? Your creativity in designing, right? And all, right? Then manufacturing, if you want to get into manufacturing, right, then you have to set up your learning in such a fashion, in such a manner that you are getting involved in different hardware projects, in different internships, in different manufacturing industries, right? Tata, Kirloskar, this, that. So many opportunities are there, right? You have to visit their website. You have to see in career section, right? When they are opening, when they are having openings for interns, when they are having openings for freshers and all. So a lot of opportunities are there. Lot of things are there. You can explore and put your attention in that direction, right? Now, likewise, maintenance is there. Maintenance comes in the form of troubleshooting, right? Troubleshooting of an electric vehicle, that will include battery, motor, controller, all those, right? So if controller is not operating properly, right, how to troubleshoot or check the controller. If motor is not giving proper torque, speed problem, rotation problem, any problem, right? How to troubleshoot that. So all these things, for that you have to engage yourself in different projects, do different projects, and do multiple projects in these different disciplines with minor project, major project approach and all. That will be helping you out in developing your career in these different disciplines, right? Then infrastructure part means charging station. So charging station, when we talk about charging stations, generally three categories are there in EV charging station: level 1, level 2, level 3. Level 1 charging usually deals with a voltage of 120 volt, level 2 around 230 to 240 volt, and level 3 will be DC fast charging, right? It will be having a huge high voltage DC voltage, right? So in India, usually level 1, level 2 are being focused because the DC fast charging requires huge investment, infrastructure, and there are challenges of grid and all also. Because imagine when everyone is charging their vehicles using an electric vehicle charging infrastructure, definitely there is going to be an impact on the grid, power grid, I mean to say, right? Then recycling, you see, nowadays there's something called e-waste, digital waste. Everyone started using mobile, everyone started using laptop, so there are lot of lithium ion batteries that are getting wasted, right? So presently there is being under development the mechanism for this e-waste, specifically for lithium ion batteries and all. In India, many developments are happening with regards to that recycling of these batteries. So likewise, for EV industry, for electric vehicle batteries, right? So recycling approach, recycling mechanism will be there for these batteries, in terms of giving a second life to the battery of electric vehicle by using it for solar application or any other application, and then taking it to the recycling process and extracting the things from the battery, right? Then the next thing comes EV business development, right? So whatever you take, any product without a business development, this is not going to get you result or returns. So business development, if you have technical knowledge about electric vehicle, if you are appropriate engineer, if you have completed diploma engineering with your work, with your portfolio in EV, right? Then you can have a huge potential to become a business development manager in EV companies also, because you see, techno management approach is needed, multidisciplinary approach is needed, right? If you are a mechanical engineer and if you don't know anything about electrical, then you're not going to survive in coming years, right? So yeah, so these are the different disciplines. As I said, these different disciplines, you will be able to leverage opportunities both in terms of employment and entrepreneurship, right? So if you want, you can start your own design and development company. You can take projects of just designing an electric vehicle, right? And if you have manufacturing expertise, you can start your own venture into manufacturing of electric vehicle, manufacturing of batteries, manufacturing of motors,
controllers, etc. Right? You can have strategic collaborations with present companies from Germany, China, Taiwan, where they have expertise. You can have a knowledge sharing or a technology sharing, and you can start your own venture here as well. Right? Then maintenance part, you can set up your own troubleshooting centers as a business model. Right? You can start your own charging station. Right? What are the charging station providers are there? You can explore their model. You can take a franchise, or you can start your own product. Right? Then recycling is a potential business model, but it will emerge in coming days when lot of electric vehicles will be adopted, and lot of EV waste will be generated. Right? Then business development, you can definitely be a business development wing for significant products in the EV industry. Right? So these are the opportunities that are there. Moving to the next. Yeah. So what are the jobs, right? So my focus specifically will be regarding to engineering discipline, right? Irrespective of the course, it might be a diploma course, it might be a BTech course, it might be a MTech course, it might be a PhD, it might be a PDF, whatever courses, degrees you are having in discipline of engineering, right? So, for example, if your interest, if your studies, if your bachelor's, master's is in chemical engineering or related to chemical engineering, right? Then you can do a job in manufacturing of lithium ion cells, in manufacturing or assembly of batteries or recycling of battery, etc. If you are a computer science engineer, right, then you can kickstart your career in EV industry in terms of developing algorithms for battery management system, making IoT modules, then improving the efficiency of BMS, and a lot of other things, right? If you're a mechanical engineer, you have opportunity for thermal systems, vehicle part design and manufacturing, etc. If you're from electronics or communication, then you can develop the firmware for the battery management system, infotainment system, power electronics, controllers, sensors, actuators, etc. If you're from electrical, then you can work on motor, quality control, testing, then homologation, harness, wiring harness, charging infrastructure, etc. If you're from mechatronics, then you can be a part of vehicle design, robotics, powertrain development, autonomous vehicles, and other opportunities, right? Same thing. As I mentioned, these are employment opportunities, what I told just now. Similarly, if you are a chemical engineer, you can, and if you have interest in business, you can start, assembling lithium ion cells, making your own battery pack and selling it, right? Likewise, you can develop different softwares, app. For example, I want to develop an app that can through which you can actually book your uh, electric bicycle for in-campus mobility, for employees, for students, etc. Right. So likewise, there are so many opportunities for business in these different fields of engineering. Right. So an engineering student, right, as an engineering student, how he can start a career in EV industry, right? So as I mentioned, start building projects from the day one itself. Start building projects from day one itself, right? So day one, when you're actually joining your university, college, school, whatever it is, right, you have to start building projects, right? Build small projects, right? If you don't have resources, use simulations, right? Tinkercad is there. In Tinkercad you can build many electronics projects without buying a single component, right? Tinkercad is there. If you are interested in app development, you are new to app development, then you can go to, you see, there are so many platforms for app development also, right? You can go to these open source platforms for app development, right? So build projects as much as you can, right? If you don't have resources, do jointly. दो तीन लोग साथ में मिलके कर सकते हैं. Seek some sponsorship from your well wishers, from your family friends, from your institute, and all, right? Then internships, right? Get involved in internships as much as you can. Don't wait for third semester, fourth semester, or academic mandate to do internship. And don't do internship for the sake of certificate or for the sake of curriculum completion or academic mandate, right? Do internships for your learning part, right? Believe me, people today, what they say that
unemployment is a problem in India. They say unemployment is a problem in India. But as we believe, we have Razak, we have Khalid, right? So unemployment is not a problem in India. Unemployment is not a problem in India. Unemployability is the problem. Unemployability is the problem. You can understand. We don't have employability skills. We don't have employability skills with the youth, with the students, with the these people. That is why we are facing issues. If a right candidate with right skill set is there, thousands of companies are there to acquire him, to get him on board, right? So do internships not for the sake of mandate, academic mandate. Do internships for your learning part, right? Do a research project. We actually lack the habit of documentation. We don't have habit of documentation. So try to focus on documentation. Write research paper, write abstract, write articles, write books, right? So research projects, like so do some research project. You can collaborate with your faculties for doing a research project. You can assist them in their PhD or research work or something, right? Then apply for fellowships. There are so many fellowships in different companies, MNCs, as a part of their CSR activity or as a part of some incubation, innovation center, like that. So apply for fellowships, go there. Even you see, recently there was an event, I think in Japan, right? There was a fellowship program, something. So many programs are there in and around us. Only thing is that you have to explore. You have to come forward, apply, explore, and consistency is the key here. So apply for fellowship, do the things as I mentioned, write papers, articles, attend conferences, present your paper, present your articles, right? Utilize LinkedIn as much as you can, right? Utilize all the professional platforms that are there. LinkedIn is there, right? Slack is there. So many platforms are there. Utilize it for the good sake and as much as you can, right? So then, uh, yeah, let me see what is the next slide. Yes. So when we talk about electric vehicles, there are two approaches being followed in the industry: new electric vehicles and retrofitting. New electric vehicles is all about bringing a new product to the market, new product on the road. Retrofitting is converting existing petrol diesel vehicle into electric. Insurance facility, finance facility readily available for retrofitting, and the cost and many other things are there, like TCO. I hope you are aware about TCO. TCO is nothing but total cost of ownership and all, right? So technology is under development, right? So many things are happening in and around us, right? So these are two different approaches. These are two different approaches, right? And when we talk about technology, let me go to the next slide. uh, yeah, so you see, in terms of technology, two-wheeler, three-wheeler, electric, LCVs, cars, buses. So these are different products that are coming, right? Generally, BLDC motor, PMSM motor are being used for two-wheeler segment, and for three-wheeler, AC induction, XL, PMSM, BLDC are being used for LCVs, PMSM, AC induction, and for cars, PMSM, AC induction is used. For electric buses, AC induction and PMSM motors are used. So you can see the technology, you can understand, you can work on these technologies, right? And the voltage also will vary in different vehicle segment. For two-wheeler, the voltage is around 48 to 72 volt. For rickshaws or three-wheeler is around 48 to 72. For LCV is also usually 48 to 72 or sometime 96 volt also it goes. For cars, 96 plus voltage will be there, and electric buses heavy voltage of 300 plus to 800 voltage will be there, right? So there are different areas that you must focus on as an entrepreneur, or if you want to take employment in EV industry.
motors are there, controllers are there, converters are there, right? Thermal management system is there, wiring harness is there, connectors is there. Then then different homologation is also opportunity. Certification, taking the certification from ARA ICAT, right? That is also a good opportunity to leverage. So likewise, there are so many opportunities. So focus on project-based learning as much as you can, right? Adopt techno management approach, right, through event competitions as much as you can, right? You see there are 10,000 plus engineering institutions in India. Around 1.5 million engineers they graduate every year. But you look at the number of people that are getting job, right? And if we really want to make India Atmanirbhar Bharat, then definitely we have to focus on skills, innovation, employability, and entrepreneurship. See, there are two clear terms. One is a skill, another is innovation, right? If you want to focus on employment, focus on skills. If you want to focus on entrepreneurship, focus on innovations, right? A clear cut funda here. And opportunities, believe me, there are plenty of opportunities: designing, developing, battery designing, CAD modeling, aerodynamics, speed, GPS technology, telematics, power electronics, sensors. Opportunities are there in every industry, aerospace, transport, because in every industry there will be need of electric vehicle. In every industry, transportation will be needed, right? Agriculture, construction, education, pharma, whatever industry you take, there will be a need of transportation. There will be need of electric vehicles. There will be need of autonomous vehicle in coming time. So yeah, focus in these dimensions, focus in these areas. If you have any quick questions, feel free to ask. There is a free course by Skillsharp on Udemy. You can enroll it for free of cost, right? Enroll, share with your other students, other community as well, right? Then yeah, thanks a lot. Thanks for your patience. Thanks for your cooperation. If you have any question, feel free to ask. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Ashhar. This is Wazir is here, and you said retrowetting, right? So in nearby Hyderabad, do we have any company where it will convert diesel or petrol car to electrical? Okay. See, we can actually convert vehicle in Hyderabad, or even we can come down to your place and do the conversion part. But it can be converted as a project purpose only, right? It can be converted as a project purpose. It cannot be used on road, because there are no certifications and approvals, RTO approval and certification, homologation certification for these models, and specifically the model that you told. So that will be a challenge. Okay, okay. अस्सलाम वालेकुम। अशर भाई, अगर हम लोगों को वो ईवी स्टेशन को सेटअप करना है, जो चार्जिंग यूनिट्स वगैरह का, उसके लिए क्या Hello, can you repeat? I guess there was some connectivity issue. या बिकॉज हमारे यहाँ पे थोड़ा स्पेस वगैरह है, हम लोग वो चार्जिंग स्टेशन ऐसा कुछ बनाने का प्लान था, तो उसका क्या ये है मैकेनिज्म ऐसा, और अप्रूवल प्रोसेस, मे बी द कॉस्ट व्हाट इज नीडेड टू बिल्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, सो कॉस्ट जो है वो आपकी पूरी डिपेंडेंट है आप कौन सा चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं। एक्चुअली जो चार्जिंग स्टेशन रहता है वो चार्जर के पावर पे डिपेंड करता है। सो 3.3 किलोवाट का चार्जर आता है, 7.6 का भी आता है, तो उसके हिसाब से चार्जिंग और चार्जर का कॉस्ट वेरी करता है। तो प्रेजेंटली देयर आर सो मेनी मैन्युफैक्चरर्स आर देयर, यू कैन पिंग मी, आई कैन शेयर यू द लिस्ट आल्सो। So ये manufacturers, they are manufacturing different chargers, right? So you can see based on features that they are providing in chargers, right? For example, few chargers comes with
चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम. सो इट कम्स विद एन ऐप वेयर जब चार्जर कोई आएगा, यूजर चार्ज करेगा तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसे वगैरह आ जाएंगे बेस्ड ऑन द रेट दैट यू हैव सेट अप ऑलरेडी. ऐसे तो बेस्ड ऑन द फीचर्स एंड ऑल उसका कॉस्ट वेरी होता है. तो अगर आप बात करते हैं नॉर्मल जो स्टैंडर्ड जनरली चार्जर अभी आता क्या है. टू व्हीलर्स और कार्स ऐसा कुछ जो है चार्ज कराना, और जैसे आपने बोला ना कि इट शुड कैटर टू ऑल सॉर्ट ऑफ ब्रांड्स विच आर प्लेइंग करेंटली. राइट. तो ये जो ब्रांड्स वाला जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली डिपेंड होता है कनेक्टर पर. ठीक है. तो यूजुअली इंडिया में जो कनेक्टर यूज होता है J1772 कनेक्टर है. तो ये कनेक्टर लेवल 1 लेवल 2 के लिए चल जाता है. ठीक है. डीसी फास्ट चार्जिंग के लिए अलग कनेक्टर आता है. तो अगर आपकी चार्जिंग स्टेशन में वो कनेक्टर अवेलेबल है तो यू कैन कैटर टू ब्रांड्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. तो चार्जर जो रहेगा इट विल बी based on the charger power based on the level. So level 1 level 2 और DC फास्ट चार्जिंग, ये 3 तरह के लेवल आते हैं अभी. तो DC फास्ट चार्जिंग वाला थोड़ा महंगा हो जाता है. इट विल बी मोर देन 10 lakhs हो जाता है अगर एक सेटअप भी आप लगाते हैं. और जो लेवल 1 लेवल 2 वाला है, डिपेंडिंग ऑन फीचर्स एंड ऑल, the cost varies from 60,000 to 1 lakh 2 lakh 3 lakh 5 lakh also. बट वो ROI जैसा अभी करंट ट्रेंड मोस्टली जो अभी आरओआई मैं आपको बताता हूँ. आरओआई आपको पेशेंस के साथ इंतजार करना पड़ेगा, सब्र के साथ, जब मे तक बी एक आपके साल यहाँ दो पर. साल तो मैनेजेबल है. मोर देन दैट आपके आपके पास देखिए, आपको स्मार्टली डिसीजन लेना पड़ेगा. यू हैव टू स्टार्ट चार्जिंग स्टेशन वेयर देयर आर इनफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अराउंड. ठीक है. तो आप उस बिजनेस पे मास्टर कर सकते हैं. जब आप जो है ऐसी जगह खोलेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी है ही नहीं, तो फिर आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, है ना. तो इसलिए यू हैव टू स्टार्ट इन अ प्लेस वेयर देयर आर significant number of electric vehicles, right? So you can refer some database, you can even consult the RTO also के कितने vehicles है, कहाँ पे है, कैसे है. some data reports are also there. उससे भी आप एक्सप्लोर करके कर सकते हैं. या फिर आपके इंट्यूशन के हिसाब से आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हैदराबाद में आप देख रहे हैं कि हर 8वीं गाड़ी जो आपको नजर आ रही है वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल नजर आ रही है. तो आपको लगता है कि हाँ, ये एरिया में कर सकते हैं ऐसे. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है. बाकी अभी चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस में अगर इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट आते हैं तो ही तो थोड़ा सा इट विल बी अ वायबल मॉडल फॉर देम, बिकॉज दे कैन हैव इनफ पेशेंस. और वो लोग इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, in multiple institutions. They can put up their charging station and wait till the time number of electric vehicle increases. तो ऐसे है. ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह. जी अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. मेरा एक सवाल था. वालेकुम अस्सलाम. जी बताइए. सिंस ओला में और S1 प्रो और ए व्हीकल्स में बहुत सारा फायर इंसिडेंट्स का ये नज़र आ रहा है, जी. और थोड़ा टाइम इंतज़ार करना बेहतर है इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने के लिए, बिकॉज मार्केट अभी उतना मैच्योर्ड इनफ नहीं हुआ है, ऐसा फील होता है. तो टू व्हीलर्स ऐसा कुछ परचेस कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो कौन सी कंपनी को जा सकते हैं तो बेहतर है? देखिए, प्रोडक्ट के हिसाब से है ना, आप प्रोडक्ट के रिव्यू और जो आपका लोकल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल फ्यू ब्रांड्स आर नॉट अवेलेबल इन ऑल द प्लेसेस. जो दिल्ली एनसीआर में ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो कुछ इतने नेशनल नहीं है कि वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे शायद साउथ वगैरह में. तो प्रोडक्ट वाइज यू हैव टू रिव्यू थिंग्स. और पहले मैं आपका वो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा जो आपने बताया, सेफ्टी वाला पार्ट. तो होता क्या है, ये जो भी सेफ्टी के इंसिडेंट्स हुए हैं या हो रहे हैं फायर सेफ्टी के, तो वो मेजॉरिटी इस वजह से हुए हैं कि द क्वालिटी ऑफ द सेल्स, राइट. तो अगर सेल्स का क्वालिटी अगर अच्छा हो, बेटर हो, तो चीजें जो है काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती हैं. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द सेफ्टी एस्पेक्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह इन कमिंग मंथ, जून जुलाई ना, अगस्त है, तो अगस्त में वी आर डूइंग अ सर्टिफिकेशन कोर्स विद ASDC, right, on electric vehicle safety fundamentals. I will share that link also if you are interested to attend that. ठीक है. और कौन से ब्रांड्स, तो अभी मैं यहाँ पर आपको मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको इनपुट्स दूंगा
इस तरह किसी ब्रांड के बारे में तो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और जहां तक बात है ओला की, और ये तो ओला के तो जो न्यूज में आए हैं, आपने देखा होगा उनका जो मोनोकॉक जो सस्पेंशन वाला सिस्टम था, उसके कुछ मसले आए हैं। और इसके अलावा जो बैटरीज के देखा है, ओकिनावा है, तो बहुत सारे ब्रांड्स के जो है फायर के मसले हमने देखे हैं। तो अभी जैसे आपने बताया है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी की बात होती ना, तो आप देखिए टेस्ला जब इतनी रिफाइन गाड़ी बना सकता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर्स हैं कि जो बेहतरीन गाड़ी बना सकते हैं, कीपिंग सेफ्टी एस्पेक्ट्स एंड मेनी अदर थिंग्स इन माइंड। और एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, like manufacturers has to ensure what they are producing is of fine tuned quality। बाकी एक्सीडेंट तो कभी भी कोई चीज से भी हो सकता है। फ्यूल और पेट्रोल डीजल इज आल्सो वेरी हजार्डस, राइट। तो टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी की बात नहीं है एक्चुअली, ये क्वालिटी और क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, ये सब चीजों की बात है। तो सेफ्टी के रीजन की वजह से आप ये कर रहे हैं, तो देन यू कैन हंट फॉर अ बेटर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड यू कैन डेफिनेटली कांटेक्ट मी, आई विल गिव माय रिव्यूज अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जहां तक बात आती है, अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ हेवी एसेट, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे खर्च कर रहे हैं, वो भी अच्छा खासा चीज खरीदने के लिए, ठीक है। तो whenever a heavy asset is there, जब भी कोई महंगी चीज होती है, तो उसका आप पैसा कैसे वसूल करते हैं? वो ऐसे वसूल करते हैं कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। अगर आप दिन में जो है बस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से आपको आपके ऑपरेशन इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा फायदा नजर नहीं आएगा। समझ रहे हैं? ऑपरेशनल इकोनॉमिक्स को समझे। अगर आप दिन का जो है 30-40 किलोमीटर चलाते हैं, 25-30 किलोमीटर चलाते हैं, और तब आप कैलकुलेट करते हैं पेट्रोल का प्राइस, तब आप कैलकुलेट करते हैं आपका जो ऑपरेशनल इकोनॉमिक्स हो रहा है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं उस लॉजिक से और उस जरूरत की वजह से, देन इट विल मेक सेंस। जी। बस यही और है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी इंशाल्लाह मैं आपको लिंक्डइन में कांटेक्ट करूंगा इस ताल्लुक से। और एक चीज हाँ, मुझे मैं कहनी है। हाँ मैं शेयर करता हूँ मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी इस मीटिंग के इसमें। जी जी एक और सवाल था। जी जी बोलिए। जी एक चीज मैं क्या देखता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस में मेरी प्रोफिशिएंसी है। ईवी का जो मार्केट है वो जो मैं देख रहा हूँ, मतलब ह्यूज कैपिटल डाल के इन्वेस्ट करके, मतलब एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के लिए नजर आ रही हैं जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है और एक्सपर्टीज, ऐसा नजर आ रहा है। अब इस मार्केट में एक आईटी प्रोफेशनल भी जंप इन करना चाहता है, तो एक देखिए मैं आपको बताता हूँ, ईवी का अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, ईवी का अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो करोड़ में आपके पास बजट होना चाहिए। इट्स अ कैपिटल काइंड ऑफ कैपिटल सेंट्रिक बिजनेस मॉडल, ठीक है। अगर आप कंपोनेंट वाइज आप जाना चाहते हैं, सर्विस में जाना चाहते हैं, देन यू नीड innovation, you need business model innovation, you need some technological innovation, then you can sustain or you can penetrate, ठीक है। अभी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जब आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं ईवी इंडस्ट्री में जो कैटर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू हैव टू डू, सी यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फोकस ऑन इनोवेशन पार्ट फर्स्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल एज ए डेवलपर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपका सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बनाने की ख्वाहिश है और योर इंटरेस्ट और योर थिंग्स अलाइन इन दैट मैनर फॉर ईवी इंडस्ट्री, सो इमेजिन मेकिंग अ मार्केट प्लेस फॉर EV products, example making a marketplace for EV product in a form of app or something like that, or making a calculator for electric vehicle where you can put your requirement and you will get the result along with, for example मुझे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर खरीदनी है, तो मुझे पता है कि मुझे 100 किलो का वजन उस व्हीकल से खींचना है, तो मैं अपने रिक्वायरमेंट पुट कर दूं तो मुझे रिजल्ट आ जाए कि मुझे जो है 1 किलोवाट की मोटर लगेगी, और साथ में साथ ये भी आ जाए, लिंक भी आ जाए कि मैंने वो कहाँ से परचेस करनी है। समझ रहे हैं? इस जी तरह जी से, so it can be in the form of app. Otherwise if you want to do something else, then IoT वाला पार्ट, telematics वाला पार्ट, फॉर एग्जांपल
develop a affordable software for getting the real-time data from the battery on the phone or on app, something like that, right? Then the autonomous vehicle wala part, ये ऐसी चीजें हैं, right? So you have to like you have to define your idea, right? Work around it, come up with some sort of prototype or MVP. Based on the MVP, take the user reviews and all, and consolidate all these things, right? Try to secure some grants from the government, try to seek some incubation support and all, secure some grants as well as go for VCs or angel investors or जो भी इस तरह के चीजें हैं उस तरह करिए, क्योंकि स्टार्टअप के लिए रिसोर्सेज डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन रिसोर्सेज ही जरूरी है ऐसे नहीं है। तो अगर आप इनोवेशन लाते हैं तो रिसोर्सेज इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। जी जी, हाँ जज़ाकल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू बकर बोल रहा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या है। ईवी में मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, एक जो भी कंपनी आई कैट वगैरह से जो भी लेके है लाइसेंस, वो लोग से मैं काम चालू कर रहा हूँ, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर का। तो मेरे को ये जानकारी करना है कि आगे चैलेंजेस क्या क्या है और लीड एसिड और लिथियम में ये दो बैटरी में फर्क क्या है, इतना मालूम करना। देखिए, फर्क वाइज है ना, टेक्नोलॉजी ही डिफरेंट है। जब हम बात करते हैं लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी की, टेक्नोलॉजी ही डिफरेंट है। लेड एसिड बैटरी क्या है, इसमें जो पावर डेंसिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है। जो पावर डेंसिटी और हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं वो लिथियम आयन में ज्यादा है, इसीलिए लोग उस पे जा रहे हैं। तो अगर आप बात करते हैं लिथियम आयन की, तो वो लाइट वेट रह के भी जो है ज्यादा पावर आपको डिलीवर करता है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग एफिशिएंसी हो गया और BMS हो गया, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं लिथियम आयन में, जिसकी वजह से हर एक मैन्युफैक्चरर्स, इवन टेस्ला जो है, आप देख सकते हैं कि वो लोग इस चीज की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली लिथियम आयन जो है, इट्स अ बेटर चॉइस फॉर अपकमिंग प्रोडक्ट एंड दैट इज व्हाई कंपनीज आर अडॉप्टिंग इट। तो दूसरा जो आपने बोला कि ARI और चैलेंजेस के बारे में, चैलेंजेस देखिए बहुत अभी चैलेंजेस खुल के नजर आ रहे हैं लोगों को, और चैलेंजेस और भी तब नजर आएंगे जब लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में बहुत अच्छा खासा सेल्स हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इस साल यूज किया, और खासतौर पर इस साल के समर में यूज किया। जब इस साल के समर में यूज करने की वजह से, समर में टेम्परेचर की वजह से और इन्वायरमेंट की वजह से जो चेंजेस आए, और उसकी वजह से जैसे एक्सीडेंट हुए, तो उससे एक लर्निंग कर्व डेवलप हुआ है। ठीक है, अब सिमिलरली बारिश में जो है शॉर्ट सर्किट जैसे और बहुत सारे और मसले आएंगे। आप देखेंगे जब ये गाड़ियां चलेंगी, जब बारिश आएगा तो ये सब चीजें होगी, तो आपको जो है पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। जहां तक बात है प्रेजेंट चैलेंजेस की, सो प्रेजेंट चैलेंजेस में बैटरी का है। ठीक है, बैटरी का कॉस्ट बहुत है। ठीक है, बैटरी का जो सेफ्टी वाला पार्ट है उसमें चैलेंजेस है, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आप इन चीजों पे काम कर सकते हैं, इन चीजों पे कुछ सोल्यूशन ला सकते हैं। और एज यू सेड, यू आर प्रेजेंटली वर्किंग ऑन 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर। तो देखिए, दो एस्पेक्ट से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट लाएंगे तो लोग डेफिनेटली उसको ये करेंगे, और आपको प्रोडक्ट के साथ साथ उसके सर्विसिंग का भी कुछ लोगों को गारंटी और सहूलत देनी पड़ेगी, कि एक एश्योरेंस दिलाना पड़ेगा कि भाई आप फिक्र ना करें, हम सर्विस के लिए मौजूद हैं, या हमारा नेटवर्क है, ऐसे वैसे जो भी है। ठीक है, और ARA ICAT दीज आर द सर्टिफाइंग बॉडीज। सो इसके लिए आपको जो भी उनके होमोलोगेशन टेस्ट है, अगर आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको सिस्टम लेवल सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको जो होल व्हीकल सर्टिफिकेशन होता है वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो एक होता है सिस्टम लेवल सर्टिफिकेशन, एक होता है होल व्हीकल लेवल और व्हीकल लेवल सर्टिफिकेशन। आपको वो दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। और खास तौर पर इफ यू वांट टू स्टार्ट और सिंस यू आर स्टार्टिंग वर्किंग ऑन प्रोडक्ट, तो मेरी एक बुक है, मैं उसका भी लिंक यहाँ पे चैट में पुट किया हूँ। आप उसको जो है अमेजोन से सिक्योर कर सकते हैं। इसमें है ना सब चीज़ें दी हुई हैं कि कौन कौन से सिस्टम, सब सिस्टम पे और किस तरह आप काम कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ बिगनर्स गाइड टू ई मोबिलिटी। सो आप वो चीज़ भी देख सकते हैं। तो उसमें ARA ICAT के अलावा और भी कुछ टेस्ट सेंटर्स हैं। ठीक है, आप उसके बारे में भी देखिए, पढ़िए। तो यही है इंशाल्लाह।
शुक्रिया भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। आप बोले थे ये लिथियम बैटरी के जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट से रिसाइकलिंग करते होते हैं, लेकिन बहुत सारे मोबाइल में और बहुत सारे जो जगह पे होते हैं लिथियम बैटरी वेस्ट रहते हैं, तो उसको जी कैसे यूटिलाइज करके मतलब कर सकते हैं, मतलब क्या टेक्नोलॉजी मतलब उस कॉन्सेप्ट में? देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या होता है, ये जो लिथियम आयन बैटरी रहेगी और खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के एप्लीकेशन के लिए रहेगी, तो इसमें जो है हाई एनर्जी डेंसिटी और हाई पावर डेंसिटी रहता है। तो जिसकी वजह से अभी बाहर कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में 5 साल 10 साल यूज हो गई, तो उसके बाद ये लोग सोलार और दूसरे एप्लीकेशंस के लिए, ऑक्सिलरी एप्लीकेशंस के लिए जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसका जो रिसाइकलिंग होता है, तो रिसाइकलिंग प्रोसेस में इसमें कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजीज और अप्रोचेस हैं। ठीक है, इन डिटेल मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। जो बुक का मैंने लिंक शेयर किया उसमें इन डिटेल मैंने रिसाइकलिंग के बारे में भी लिखा हुआ है कि क्या है कैसा है। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि रिसाइकलिंग में लोग क्या करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो जो चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे कोई मेटालिक चीजें हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी की चीजों को फिर वेस्ट की तरह उसको डिकम्पोज करना है, जो करना है वो कर देते हैं। तो रिसाइकलिंग में वो वाला प्रोसेस है। और जहाँ तक बात है जो ई वेस्ट, जो नॉर्मल चीजें डेवलप होती हैं, तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में अभी एग्जांपल लें आप, टेस्ला की बैटरी 7000 सेल्स होते हैं। तो एक सेल आप उसका कॉस्ट और उसका उसका मेटल देखिए या उसका जो मटेरियल है वो देखिए, तो एक ह्यूज वेस्ट जो जनरेट होता है, उससे जो काम की चीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल इट कैन बी मेटल, इट कैन बी अदर थिंग्स दैट आर देयर। सो उस चीजों को वो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस। जरा जरा जी सर ये मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी जो गवर्नमेंट नॉन आरटीओ में 25 किलोमीटर रेंज दिया है, मगर गाड़ियां जो चल रही है 45 किलोमीटर 55 किलोमीटर चल रही है, मगर आरटीओ का जो है ना दिया है गवर्नमेंट से 25 किलोमीटर रेंज। तो वो ये देखिए क्या सर, वो फ्यूचर में ये हाँ, लोग प्रॉब्लम होगा, ये लोग जो ले रहे हैं 25 किलोमीटर ये रेंज तो नॉन ये आरटीओ तो में? सिस्टम का मसला है। ये तो जो है सिस्टम का मसला है कि लिखा है 250 वॉट और उसका पावर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो वो तो इंस्पेक्शन सिस्टम और आरटीओ का मसला है। वो चाहे तो आज भी उसको उसके लिए, अगर हो सके तो आज भी उसके लिए मसला होगा, होना है तो कल भी उसके लिए मसला होगा। तो जब वो चीज इम्प्लीमेंट होगी, जब वो स्टिकनेस आएगा, तो वो डेफिनेटली मसला तो होगा। और ये चीज है। ये तो उसको पकड़ने की जरूरत है ना। जब भी वो पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाएगा, तो गलत है वो। सही है भाई। हाँ, ठीक है। सैफ भाई हैं आप यहाँ पर? सैफ भाई है? Yes, sir, bhai. Mashallah, very nice session. Very good interaction also with the जी participants. अल्हम्दुलिल्लाह। We need more of your knowledge sharing with us. इंशाल्लाह सैफ भाई, It's इंशाल्लाह। very hot domain, mashallah. अल्हम्दुलिल्लाह। जी फाइनली एक ठीक बात है। तो है सर, इसमें मतलब डेवलपमेंट है, आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कुछ करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी। देखिए, आप जो भी कर रहे हैं उन चीजों को आईपी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप कोई भी कंपनी रन कर रहे हैं, आप उसका उस चीज पे फोकस कीजिए कि आप जो है किस तरह ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीजों पे जो है, क्योंकि ये आपकी कंपनी का एसेट और वैल्यू बन जाता है। ठीक है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर हो, उन चीजों पे फोकस कीजिए और चीजों को डॉक्यूमेंटेड रखिए। ठीक है, और बाकी अल्लाह आसान करे इंशाल्लाह। सही है सर। मैं काफी इन्वेस्टिगेट किया इस बारे में, और काफी कंपनीज वगैरह विजिट किया, और करने के बाद पता चला कि भाई जब आरटीओ का लेना है लाइसेंस, तो उसके लिए बहुत बड़ा मगजमारी है, कम से कम बहुत अच्छा खासा पैसा खर्चा है एक डिजाइन के लिए, एक मॉडल के लिए। नॉन आरटीओ में उतना ज्यादा कुछ खास पैसा नहीं है, जो अपना ब्रांड चला रहा है सर्टिफिकेशन तो के लिए उसके लिए। देखिए, टू व्हीलर की सर्टिफिकेशन में आपको 18-20 लाख कहीं नहीं गए। ठीक है, जी और 3 व्हीलर 4 व्हीलर, मैं बता रहा हूँ 3 व्हीलर 4 व्हीलर के सिर्फ रेट्रोफिटिंग के लिए 30-40 लाख होता है। तो नया नया प्रोडक्ट के लिए तो फिर और ज्यादा कॉस्ट होगा, और वो पर्टिकुलर मॉडल के लिए ही रहेगा। जी जी।
ऐसी ऐसी जो कंपनी जो कम ज्यादा से ज्यादातर मैं देखा हूँ जो रेट कम में दे रहा है वो सारा माल जो है ना, जितना भी माल आ रहा है ना, पूरा चाइना से इंपोर्ट होके आ रहा है। और बहुत सारी कंपनियां बोल रही है कि मेड इन इंडिया है, फिर भी वो माल जो है ना चाइना का ही लगा के मेड इन इंडिया के लगा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। हाँ वो तो हो रहा है अभी, वो सैड रियलिटी है, अभी हो रहा है, अभी लोग बिजनेस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब क्या है। सही है सर। सर ये सारा माल जहाँ तक मैं इन्वेस्टिगेट किया हूँ, देखो सर, नंबर 1 दिल्ली आया है सस्ते में देने में, और दूसरा तो कुछ भी मतलब उतना सस्ते में देने वाला दिल्ली के अलावा कोई दिल्ली नजर में नहीं ही है। मिलेगा, दिल्ली के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिल्ली में जो लैंडिंग प्राइस में थोड़ा सा वो लोग मार्जिन ऐड करके दे देते हैं, बाकी जगह आप देखेंगे सेम किट अगर आप 750 वॉट 48 वोल्ट का अगर आप मोटर कंट्रोलर का जो किट है दिल्ली में लेंगे, आपको 4,500-5,000 में मिल जाएगा। सेम चीज अगर आप आंध्र प्रदेश हैदराबाद आएंगे, 9,500-9,000 के नीचे कोई नहीं देगा। यही तो प्रॉब्लम, यही दिक्कत जा रही है। और दिल्ली में प्रॉब्लम ये है कि कोई अच्छा कंपनी जो है ना अपने को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इसमें सजेस्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। नहीं, आप कांटेक्ट कीजिए, एक दो नोन सप्लायर्स हैं, मैं उनसे भी शेयर करने कराता हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप ये कर सकते हैं, तो जी ऐसा कोई मसला नहीं। हाँ जी सर, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा सर। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। जी इंशाल्लाह। ठीक है, जजाकल्ला अशर भाई, we need more of your guidance inshallah. ठीक है, thanks to all the participants also, we'll keep on having such webinars inshallah. Please do join, take out your time inshallah. शुक्रिया शुक्रिया बहुत। Assalamu alaikum. We'll close this session inshallah now. अल्लाह इंशाल्लाह। हाफ़िज़। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।